Hello, good morning, students. I hope you all are fine and doing your maths work nicely in your copies, right? Okay. So, students, yesterday we have done the multiplication sums. Yes, with the two-digit multiplier. Like from your till your second level, you were doing the multiplication by 7, by 8, by 9 by using their table, right? But now in your class 3, you may have the questions where you will multiply with the two-digit multiplier. As you can see now, 543 multiplied by 87, 809 multiply by 69. ओके, मल्टीप्लिकेंट तो आपने किया ही हुआ है. ओके, बट यहाँ मल्टीप्लायर में टू डिजिट्स हैं, यानी कि जो बॉटम पे नंबर आता है उसमें टू डिजिट्स हैं आपके पास. सो yesterday I have explained you, but today I want to explain you again so that you can understand nicely concepts. Okay, because as this is the most important concept of your maths book, right? Okay. So students, as you can see that first question is 543 multiplied by 87. Okay. So students, as I have already guided you ki like in mathematics, when we are doing addition, when we are doing subtraction, multiplication, division, arrangement of digits is very important. That means when we will write these numbers 543, it's not that आप ऐसे लिखने वाले हो 543 multiplied by 87. No, this is very congested. In this way, if you will solve, you are not going to get your answer correctly. So arrangement of numbers means beta you have to write the digits with proper gap. अब ऑटोमेटिकली आपकी मैथ बुक्स में तो बॉक्सेस बने हुए हैं, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू राइट द डिजिट्स विद अ प्रॉपर गैप. ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू राइट द डिजिट्स वेरी नाइसली. नाउ एंड बेटा एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो आपके पास टू डिजिट्स के मल्टीप्लायर होते हैं, this will go for a long calculation, so it's very important you should have a space on the top for writing the carries. Okay, yes students, first step is that we have to multiply 543 by 7, that we already know. Okay, so for some time you should forget this. आप इस 8 को भूल जाओ कि there is no 8. ओके, आप 7 से मल्टीप्लाई करो, दैट यू ऑलरेडी नो. ओके, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी आ जाएगा. 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, 0 वी विल राइट हियर, 3 वी विल राइट एज अ कैरी. देन 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 3 38. So that means 3 is going in the next place, which is 1000. 38 we will write. Okay students, now what is the next step? अब next step बेटा होता है, आपने 543 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, इवन इन द रफ कॉलम ऑल्सो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ. आपने 543 को 7 से मल्टीप्लाई किया. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू मल्टीप्लाई सेम 543 but with 8. Okay, 8 is the digit of multiplier at tens place. As we know now, this column is tens place, this column is ones place, this column is 100 place. Okay students, तो अब आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है 543 को. Okay, the process will remain same, but before you start with this, I want to give you one tip. Now what is that tip? So listen to your teacher carefully. अब आपने 8 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके कैरी आए हैं, आप उसको कट कर दो सबसे पहले, so that you should not get confused while multiplication of 8 कि मैम which carry should I add to write the answer. Okay, so it's better you should cut the carries, and now we will write cross here. Now you will say, ma'am, what is this cross? Yes beta, this cross means 0.
Okay, that means if I am saying 8 is at tens place, and whatever will come after multiplication, that should be written from the tens place. यहाँ से लिखना start करना है. So that is why we are writing in the ones place column as cross. ओके ये रीजन होता है सबसे बड़ा, बिकॉज 8 इज अ टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द मल्टीप्लायर, सो इट्स मल्टीप्लीकेशन आंसर शुड बी रिटन फ्रॉम द टेंस प्लेस ओनली. ओके चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है चलो, अब आपको मैंने बताया 8 से मल्टीप्लाई करना है. चलो सबसे पहले 8 को 3 से करोगे. 8 3 are 24. 4 I am writing here and 2 will go as a carry on the top. 8 3 are 24. 4 I will write here and 2 will go to the next place. क्योंकि ये वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किए हैं तो कैरी कहाँ जाएगा, टेंस प्लेस पे जाएगा. ठीक है चलो नाउ अब क्या करना है, 8 को 4 से करोगे. 8 4 are 32. 32 plus 2 34. अब 34 नहीं लिख देना क्योंकि अभी एक और डिजिट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 and 3 will go as a carry. Okay, and then अब आपने फाइनली 8 को किससे करना है, 5 से. अब कोई और डिजिट आगे नहीं है. 8 5 are 40. 40 plus 3 43. So we will write complete number 43 now, because after 5 there is no more digit to multiply. Okay, now this is the time to add the numbers. अब ऐड करने से पहले ना बेटा एक और टिप आपको बताती हूँ. अब ऐड करने से पहले रफ में 543 को 8 से मल्टीप्लाई करके रफ में देख लो, बिकॉज it will give you more clarity. Okay, 8 3s are 24. Okay, 2 carry. 8 4s are 32. 32 plus 2 34. 4 again, and then 3 carry. 8 5s are 40. 40 plus 3 43. So the answer is 4344. This is the same here. Okay, so that means we are right. Now this is the time to add. अब आपने add करना है बेटा. Okay, this cross means 0. This cross doesn't mean multiply 1 multiply by, no, this it means 0. तो आप ऐसे बोलोगे 1 plus 0. You will say 1 plus 0 ma'am 1. 0 plus 4 4. 8 plus 4 12. तो 12 नहीं लिखना, 2 लिखना है. 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट कॉलम में. Then आप you will have to add these 3 numbers. It will come as 7 and here it will come as 4. So the answer is so big. Okay, let me tell you the number name, 47,240. Right? Okay. So now see the beta next question. 809 multiply by 69. Same process. You will write the numbers very very nicely. Okay, अच्छे से arrange करोगे. 8 0 9 multiply by 69. Okay, and make sure you have on the top पे आपके पास स्पेस है कैरी लिखने के लिए. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. अब आप मेरे साथ साथ रफ कॉपी में करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज 809 विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद 9. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. 9 9 is 81. 1 we will write here. 8 will go as a carry. 9 zeros are 0. 0 plus 8 8. Here you can have a very very simple trick कि जब भी बेटा किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके टॉप पे अगर कोई कैरी आता है तो वो कैरी एज इट इज भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा और 0 प्लस 8 8 होता है. Then 9 will be multiplied with 8. 9 7s are 9 8s are 72. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं. 9 8s are 72. Let me write very very neatly for you. 9 8s are 72. Okay, here 8 will come. Here 72 will come. अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपको क्या समझाया था, आपने कैरी को कट कर देना है, प्रीवियस कैरी को. चलो इसको कट कर देते हैं. हेयर ऑल्सो वी विल राइट क्रॉस. वी विल राइट क्रॉस. नाउ
नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 809 विद 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। चलो 6 9 54, 4 we will write here, okay, 5 will go as a carry in the tens place, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो वंस प्लेस से की है तो कैरी टेंस प्लेस पे जाएगा। देन 6 0 0, 0 plus 5 5, okay, yes. Do with me in the rough copy, only then you will understand. 6 9 54, 4 we are writing here, 5 is going as a carry, 6 0 0 0। अब कहोगे मैम ये तो हमने यहाँ पे टेंस कॉलम में मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आंसर आ रहा? नो बेटा, बिकॉज हमने वंस प्लेस पे क्रॉस लिखा है, सो दैट इज वाई जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो वन प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। अब 6 0 0, 0 plus 5 5। अब आपने 6 को 8 से करना है, तो जो भी आएगा आप एज इट इज कॉपी कर दोगे, एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। एंड देयर वाज नो कैरी। अब आपने क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। नाउ वी विल डू एडिशन, सिंपल। 1 plus 0 1, as I have told you this cross means 0 1। 8 plus 4 12, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से लिखना है आपने कैरी, ठीक है। 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, okay, then 8 plus 7 15, okay, 1 carry, 4 plus 1 5, okay students, so this is your answer। and of course in the rough column में फर्स्ट डिजिट तो आपने बिल्कुल सही निकाली है, बट आप कर सकते हो रफ कॉलम में, आप क्या चेकिंग कर सकते हो? 809 मल्टीप्लाई बाय 9 चेक कर लेना। लाइक लेट मी डू फॉर यू। आपका बेटा ये आ जाएगा 7281। यस, सी माई फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। इन द सेम वे यू कैन डू 809। अब सेकेंड डिजिट से भी चेक करके देख लो, 6 से मल्टीप्लाई करके देखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 54 एंड दिस इज 48, ओके। सो सी दिस माय फर्स्ट रो इज ऑल्सो करेक्ट। और एक बार अपना एडिशन भी चेक कर लेना, ठीक है। सो बेटा दिस इज हाउ यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन सम्स। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम रूल्स रिटन, ओके, इन योर बुक page I will let you know, ठीक है। that means there are some properties, page number 87 it is, okay। properties means there are some rules। अब rules होते हैं, जैसे हमने addition में भी किए थे, हमने subtraction में भी किए हैं, in the same way there are some rules in the multiplication also। so read with me। The product of two numbers does not change when we interchange the order of multiplicand and multiplier. This is called commutative property, that we have done in the addition also na, कि if we change the order of the numbers in addition there is no change in the answer, and same happens with the commutative property of multiplication also। at that you know कि if 3 4s are 12 है ना, अगर आपको पता है 3 4s are 12 होता है, so you will say ma'am 4 3s are 12 is also there। so that means order of numbers in multiplication doesn't change the answer, okay। now see the second property। now second property is very very important property, okay। second property, first I am reading and then I will explain you। this is your second property, you can see at the screen। the product of three numbers। अब commutative property में they were talking about two numbers, but in next property they are talking about three numbers। the product of three numbers remains the change when the grouping of number is changed। this is called associative property। that means if they are talking about three numbers, that means they are telling us about associative property, okay। so let's see what is this property, क्या meaning है इस property का, okay। let's see some examples। these are the examples, okay। like you can see that they have to multiply these three numbers, 16 multiply by 8 multiply by 4, okay। they have shown us different ways, like first in this first way they are simply doing first 8 and 4, okay। इन्होंने 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया
and whatever answer is coming, then they are multiplying 32 with 16. Okay, and the answer is coming 512. So in this case we have made a grouping of 8 and 4. मतलब अगर इन्होंने ये इनका कहने का मतलब है कि ग्रुपिंग हम कैसे भी कर सकते हैं. इफ वी हैव 3 numbers, if we have 4 numbers, even then also the answer doesn't change. But if we are doing multiply carefully, बट आप मल्टीप्लाई रॉन्ग कर रहे हो तो फिर तो रॉन्ग ही हो जाएगा ना. यस. अब see this example, the same number 16 into 8 into 4. Now see, first they are doing multiplication of 16 and 8. 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, it will come 128. Then 128 they are multiplying with 4. Okay, the answer is 512. So both the answers are correct. That this is the meaning of associative property only. If we have 3 numbers in multiplication, we can multiply any 2 number first. Grouping का मतलब यही होता है कि we can multiply any 2 number first. Okay, and then their answer we can multiply with the third number. The answer doesn't change. Now the next property beta, third is very very important, multiplicative property of 1. अब जैसे इस property में लिखा हुआ है, read with me, the product of a number and 1 is the number itself. This is called multiplicative property of 1. That means if we multiply any number by 1, we get the same number. Like 436 multiplied by 1, 436. 9801 multiplied by 1, 9801. 7896 multiplied by 1, 7896. So this is the third property. Again you should read with me, multiplicative property of 1. Okay, that means any number multiplied by 1, we get the same number. Now the next is multiplicative property of 0. Okay, that we have written now. The product of a number and a 0 is always 0. Okay students, yes, the product, that means if we multiply any number by 0, we get the same number. Not we are not going to take this fact. Ma'am, see 7501 is a very very big number. तो जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आने वाला है. Yes. Okay, if there is a 0 in the multiplication, answer will come as 0. So beta, this is how we have done 4 properties. First is commutative property. That means we can multiply 2 numbers in any order. Second property, associative property. That means if we have to multiply 3 numbers, we can do multiply any 2 number first. और आपकी बुक में लिखा है कि we can make the grouping in any order. ग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि 2 numbers को मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो. Third one is multiplicative property of 1. Okay, if we multiply any number by 1, we get the same number. And next property is 0. If we multiply any number with 0, we get answer 0. Okay. So students, after the properties, you have to do exercise 30. Okay, these are just fill up and that we have done in the addition also. I think you remember, you have remembered. Okay. अब बेटा इसमें इन्होंने यही बोला है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फिल अप. आपको फिल अप करना है. ठीक है. अब लाइक आई हैव गाइडेड यू इन एडिशन चैप्टर ऑल्सो कि इफ देर इज अ इक्वल साइन, what is the meaning of this equal sign? That means they are talking about left side and right side. Left and right. Okay, if you will see at the right hand side, they are doing multiplication of 2 numbers, but in the left side there is a 1 number. So which number is not there in the left hand side, which is actually there in the right hand side? 38. So we will write 38 in the answer. देखो हमने multiply नहीं किया, but we are ready with the answer. Now see the next one. Okay, in the left side now again fill up is here,
but in right hand side there are two numbers. 42 तो है हमारे पास, 76 is missing, so we will write 76. Okay, now third one, 68 multiplied by 39. That means in the left hand side both numbers are given. That means in the right hand side missing number is there. 39 तो we have here also, here also. So 68 is missing, we will write 68. Okay, then question 4 also you can do yourself. Question 5 also भी आप कर सकते हो. 6 भी कैसे करोगे? लाइक लेफ्ट हैंड इक्वल है ना, इक्वल से पता चलता है बेटा, ठीक है, कि ये लेफ्ट साइड है और इक्वल सिंबल के इधर जो है राइट हैंड साइड है. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, but in the right hand side only one number is there. So which number is not there in the right hand side? 82. Okay. Next is question 7. Now here we have three numbers. See, three numbers are there in the left hand side, but in the right hand side there are only two numbers. चलो देखते हैं right hand side पे कौन सा number missing है. 19 here we have, 19 also we have, 48 we have, 48 also we have. So 53 is missing, so we will write 53 in the fill up. This also you can do yourself. Now here a number is multiplied by 1, so we will get the same number. Okay. Question number 10. Any number multiplied by 0, 0. You are not going to see, ma'am, this is a very, very big number. No. Any number multiplied by 0 is 0. Okay. So, beta, this is how you can do this exercise in your book only. And properties also you should learn that I have taught you today. And of course, अब जो आपकी exercise 29 थी, in that we have left some questions ना, that you can do in your practice copy. Okay, you should do that questions क्योंकि multiplication आपको easy से नहीं आएगी. You should practice at least 5 sums in a day. So that's all for the day. I will send you the homework. Bye bye. Take care.